yourself in short? First of all, good evening, sir. Thank you for giving me this opportunity. I am Ravi Vyas. I live in Dharampuri. I have completed my B in Civil Engineering from Prestige Institute in 2017, and currently I am pursuing MTech final year. Okay, MTech final year. Your degree pass out your college name? So Arvindo Institute. Where is this college? Sorry, sir. Where is this place? This college? Say Indore. In Indore only. Okay. Yes, sir. So, are you okay to relocate the job or positions? Means, suppose Yes, sir. I have a job in the Mumbai. Are you okay with that? Yeah, yes. You're married or unmarried? Unmarried, sir. Okay. So, what do you think? Why structure engineering? Why everyone want to become a structure engineer as an engineer? So structural engineer field is a very what can I do? Sorry, sir, for English. Hmm. So basically, structural engineering is the most important branch in civil engineering, which deal with structure design of buildings and dams, for water tower, uh, like construction work. Okay. And what are the important IS code as an engineer in the structure engineering? So very important code for building construction is IS 456, and after that we can use IS 1875 part 1, part 2, part 3 for load calculation, and Part one for 1893 part for decode that part one, part two, part three, sub IS 1875 part 1 for dead load, part 2 for live load, part 3 for wind load. and part four and five. Part 4, sir, I not remember. But basically, three code we deal with. Okay. Yeah. Okay. And you just learn the stat pro. What are the things you can do in stat? So we can do state pro analysis and design of all type of building towers and PV structures. PV structures design tower you can do, right? What is Yeah. PV? So pre-engineering building sections which are used for truss and warehouses. How many lectures you watch in stat? So 34. Why only 34? So presently I am in working, so I have too much load for work. Last month due to building work, I not have suitable time for that. Got it. And you just started your RC solar project No sir. and you created your portfolio and resume. No sir. Sorry sir. So that means you, right now you're not looking for any job. So I'm looking for job, but presently I don't prepare. Uh, You're not prepared for that, right? yes. Okay. What's your hobby? So to watch a movie, historical movies, Okay. What's your daily and routine? so first of all, I walk in 6 o'clock, and after that, daily routine work. Then 9 o'clock, I went to office, and after 7 o'clock, return to home, and after that, learn software classes. Got it. थैंक यू सो मच रवि. लेकिन रवि अभी थोड़ी सी मेहनत और कर दो दोस्त, क्योंकि रीज़न क्या है ना कि यू आर नॉट मैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. Yes. तो मैरिड नहीं हो, ठीक है, हो सकता है तुम्हारी प्रेमिका होंगी, तो प्रेमिका को बोलो थोड़ा सा कम समय, ठीक है, बेहतर भविष्य के लिए. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी कैसे है ना कि तुम घर पे आने के बाद तुम्हारे पास समय अभी अभी माना जाएगा कि समय है. ओके. और अभी नहीं किया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी. तो कोशिश करो कि थोड़ा Sure. कम्युनिकेशन पे काम करो. मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि वहाँ तुम लैग कर रहे हो, है ना. और दिक्कत कब होगी, जब तुम किसी इंटरव्यू में जाओगे वहाँ पर, क्योंकि कैसे तुम्हारा करियर गैप है. इसको मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेट गैप मीन सेंस यू आर नॉट इन द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बेसिकली, राइट. सो Yes, sir. एट दैट टाइम यू हैव ओनली वर्ड्स. ठीक है. अभी मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर मुझे मेरा कम्युनिकेशन की वजह से इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ. तो ऐसी सिचुएशन ना बने, इसके लिए दोस्त आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अभी से अवेयर रहना पड़ेगा. मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ उसने क्या बोला. ठीक है. ही इज़ वेरी गुड इन दैट मीन्स
वो टेक्निकल में बहुत अच्छा है, बट अभी आप देखिए कि उसका प्रॉब्लम कहाँ पर हो गया कि ये देखिए क्या लिखा है कि नमस्ते सर, अनिश हल्के बोल रहा हूँ सितंबर वैसे आज टेक्निकल राउंड था जी सोर्स में, मैनेजर शुभम गुप्ता, ये मेरा स्टूडेंट ही है शुभम भी, जो इंटरव्यू ले रहा था, ने इंटरव्यू लिया, थोड़ा इंग्लिश कन्वर्सेशन ठीक ना होने की वजह से क्वेश्चन को ठीक से जवाब नहीं दे पाया, 50-50 रहा, पोर्टफोलियो अच्छा है सर, सर पर सोचा आपको बता दो, समझ रहे हो, Yes, sir. मतलब उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया ड्यू टू कम्युनिकेशन, है ना। अच्छा स्टूडेंट है, मैं उसका पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो हैरान हो जाओगे इतना अच्छा कौन बनाता है, बट इतनी टेक्निकल चीज़ें हो के भी हम एक्सप्रेस ना कर पाए तो गड़बड़ है ना। Yes, sir. तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए जल्दी से कर लो, थोड़ा सा और पुशअप करो खुद को, सुबह सुबह उठो, ठीक है, और अगर क्या बोलते हैं कोई काम नहीं करते तो सुबह 1 घंटा हम पढ़ेंगे, खत्म। घर पे खाना तो Yes, sir. बनाते नहीं होगे, खाना तो बन के ही होता होगा, राइट, नहीं सर, बनाना रहता है। बनाना रहता है। तो क्या, Yes. तो तुम ऐसा कर सकते हो ना कि खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर लो, जैसे कि कुछ टिफिन जैसे जी सर्विसेज, जरूर। ठीक है, मानते हैं कि तुम्हारा थोड़ा सा पैसे खर्च होगा, बट तुम अभी उस स्टेज पे हो कि तुम 2-4 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकते हो, राइट। यस। तो तुम्हारा यस। क्या बोलते हैं 4-6 हज़ार रुपये जाने से तुम्हारा टाइम बहुत सेव हो रहा है ना। सही है सही। देखो कहीं कहीं पर ना हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, जैसे कि ये चीज़ मैं अपने टाइम पर बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं ऑन ऑफलाइन नहीं लेता हूँ, देखो गलत चीज़ है, मेरी हैबिट बैड हैबिट बोल सकते हो, बट मुझे लगता है जितनी देर में मैं वो ऑफलाइन चीज़ लूँगा उस समय को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा वो चीज़ मुझे महंगी हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। सही। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑफलाइन गए हो 20 रुपए का सामान लेने के लिए, बट गए तुम 1 घंटे तुम्हारे वहाँ पर गए, नो डाउट दूसरे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं आपको ये करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, आई ऑलरेडी आई बिलीव इन दैट, बट 20 रुपए के सामान के लिए 2 घंटा खराब करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे की बहुत वैल्यू है। तो सेव करो ऐसे टाइम को, सेव करके इसको लगाओ स्किल पे, ठीक है। श्योर श्योर। ओके जी चलो, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर विशाल, मिस्टर विशाल रेडी, Yes, sir. वेरी गुड, जस्ट टाइप ऑन योर वीडियो विशाल, इट विल बी ग्रेट, परफेक्ट, Glitch. स्क्रीन इज विजिबल बट नॉट यू, सर अपडेट करने के बाद कुछ कैमरा में इश्यू हो रहा है। अच्छा एक बार कैमरा ऑफ करके फिर से ऑन करो, नॉर्मल कैमरा पे एरर ही दिखा रहा है। ओके चलो विल मैनेज इन दिस ओनली, ओके। सो मिस्टर विशाल, व्हाट इज शियर फोर्स, Shear force is a lateral force on beam or any structural member, ओके, uh, व्हाट्स योर डेली, showing shear force variation along the length of the member. ओके एंड व्हाट इज डिफ्लेक्शन, Uh, Deform any applied due to load. एंड Any member. व्हाट इज टॉर्जन, Uh, uh, it is a horizontal force to twist any member. व्हाट इज डिजाइंड विंड स्पीड, मीन्स हाउ टू कैलकुलेट डिजाइन विंड प्रेशर, सॉरी डिजाइन विंड प्रेशर, Design intuition. Yeah, there are three factors to multiply K1, K2, and K3. Yeah. how many seismic zone in India, 5, मतलब 4. 4, what is the factor of zone 4, 0.24. 0.24, and what's your strengths and what's your weakness, My strength is I'm hardworking and quick learner and self-motivated person. My weakness is I'm detail-oriented person. give It me is give me an example of your strengths, you are hardworking as you said, so give me an example of that, I can qualify and get exam. you just qualified the GATE exam in which year, And this last year, last year, 2024. okay, how many marks you get,
how many marks and how much rank you get? Mark is 31.36. Okay. Why you not score more than that? But during college period, I'm not able to time this exam. What is torsion? Don't know, sir. Okay. And what are the different types of shear wall we can design, or what are the different types of shear wall? Um, uh, Load bearing server are C-sec now. Okay. Uh, what should I hire you? Sorry, sir. I'm not prepared for this. Okay. And what's your salary expressions? Salary is first, not priority to the first. And pressure is I'm pressure. Salary is not first priority for me. This big platform to start my career. What's your daily And routine? I'm wake up in 6 o'clock and then 6 to 8 I'm workout and then other extra work is wake up and study time is 12 to 1 a.m. 1 p.m. 12 means study time is? Uh, 11 to 1 p.m. Okay, morning 11 to 1, evening 1 p.m. Huh. It's too much. You preparing for any government exam or anything else? Yeah, that is this time is 3 to 5 p.m. Okay, you preparing for exam, right? Yeah, Which exam? BMC. BMC exam. Then why are you looking for the job also? I'm interested in structural field And and also you're looking for the job in the government. uh, and that is achievement. Okay. Means you just want to crack the government exam, but you don't want to do the job in that, right? Yeah, do government job also, but Then why should we hire you? If you're passionate for the structure for the government exams, I'll hire you. You're not going to be focused. not. Uh, देखो क्या होता है विशाल, यहाँ पर हम फंस जाते हैं, है ना? फंस तुम क्यों रहे हो पता है? क्योंकि तुम गवर्नमेंट एग्जाम को तो बहुत फोकस दे रहे हो, कम्युनिकेशन को फोकस नहीं दे रहे हो। अब yes. यहाँ से तुम निकल ही नहीं पाओगे, जहाँ पर मैंने फंसा दिया। Uh, ठीक है, ऐसे बहुत बार होगा, तो इसलिए बोलता हूँ पहली बात तो मॉक स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये फंसने वाला जो पैटर्न है ये आज नहीं तो कल फेस करना ही है 2-4 कंपनी में ना। yeah, sir. क्यों ना हम अभी फेस करके रखें वाली चीज़। अब यहाँ पर तुरंत तुरंत आंसर मिल जाएगा कि ऐसा नहीं बोलना है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। Okay, sir. ऐसा बोले तो तुम फंस जाओगे, फिर गए तुम जॉब से। कोई भी इंसान ऐसे पर्सन को नहीं रखना चाहता है जो पार्ट टाइम तुम्हारे काम को करे। Yeah, sir. Yeah. ठीक है, तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा फोकस गवर्नमेंट एग्जाम पे है, नोटिफिकेशन देखने पर है, सॉल्व पेपर सॉल्व करने पर है, तो मेरा काम कैसे करोगे? और मैं तुम्हें सैलरी भी दूँ, इससे बेटर तो वो है जो फुल टाइम काम करे मेरे लिए। समझ गए? तो हमें ये नहीं शो करना है कि आप प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सेकंड थिंग, कम्युनिकेशन पे वर्क करो विशाल, अगर सैलरी पैकेज अच्छा सर चाहिए तो। हिंदी में कोई मतलब इंटरव्यू नहीं होता क्या? बहुत छोटा फॉर्म रहेगा तो मैनेज कर लेगा तुम्हारे लोकल लैंग्वेज में। जैसे तुम अगर पंजाब में हो तो पंजाबी पूछ लेगा, तुम क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में हो तो मराठी में पूछ लेगा, ठीक है? अगर तुम क्या बोलते हैं चेन्नई वगैरह में हो तो वहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस हो वहाँ के पूछ लेगा। बट ये बहुत छोटे फॉर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पैकेज नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है, पैकेज चाहिए एमएनसी, क्योंकि पैकेज इज प्रोपोर्शनल टू द कंपनीज टर्नओवर।
भाई मैं चाह के भी 1 लाख रुपए का पैकेज नहीं दे सकता हूँ किसी को, ठीक है। तो उसका हम्म। रीज़न क्या है, कंपनी का टर्नओवर। अगर स्टूडेंट में क्रिएटिविटी है हाँ, और उसके पास कम्युनिकेशन नॉलेज नहीं है, क्रिएटिविटी दिखे कब तो, जो प्रोजेक्ट है किए हैं उसने उसमें से। अब प्रोजेक्ट तो बाद में आ गया ना, पहले तो हम फेस टू फेस में आ गए ना। हिंदी में ज़्यादा कुछ डिलीवर कर सकता है ना सामने वाले देखो को। देखो कैसे होता है, जैसे कि तुम्हारी मिठाई की शॉप है, तुम बहुत अच्छी मिठाई बनाते हो, कोई डाउट नहीं है, बट बाहर का जो अपीयरेंस वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम्म। क्या होगा, वो मिठाई की दुकान तक लोग पहुंचेंगे ही नहीं ना। लोग किसके यहाँ चले जाएंगे, अरे कितनी अच्छी लाइटिंग किया हुआ सामने वाला, अरे भले वो थोड़ा सा हम्म। नॉर्मली मिठाई होगी इसकी चल जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए हम्म। जो अपीयरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस अपीयरेंस में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। वही, इस इंग्लिश में ज़्यादा कुछ डिलीवर नहीं कर पाता ना, तो। यही कर लेना है ना। देखो कैसे होता है कि ये चीज़ ना, कोई से कि 12th हाई स्कूल पास बच्चा है उसके लिए एक बार मैनेजेबल हो जाता है, एक बार तुम डिग्री में आ जाते हो तो तुम्हें लोग मैनेज नहीं करना चाहते। एक बड़ी चीज़ है ना डिग्री, तो लोग हम्म। सोचते हैं यार इसको तो डिग्री किया, इसको तो आना चाहिए, समझ गए। मैं तुमको बहुत बड़ी राज बताता हूँ कि जब मैं कम्युनिकेशन में ठीक नहीं था, हम्म। तो मैं 12,000 की सैलरी पे जॉब करता था। जब मैं कम्युनिकेशन में ठीक हुआ तो मैं 35,000+ पे काम करने लगा, सेम स्किल पे, थोड़ी सी इंक्रीमेंट्स पे, ठीक है। कैसे, बड़ी कंपनी पकड़ लिया ना उसी कम्युनिकेशन के दम पे, ठीक है। और जब कम्युनिकेशन नहीं है, मैं तो इंट्रोड्यूस, तुम तो इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो, मैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाता था, क्योंकि कभी प्रैक्टिस ही नहीं हुई। और प्रैक्टिस के बाद यहाँ का माहौल ही ऐसा नहीं था, हमारे छोटे शहरों में से कुछ बात ही नहीं करता कोई, अंग्रेज बोलने लगेगा तुमको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो देखो कैसे कम, देखो पैकेज तुम्हारे ऊपर है, लोग बोलते हैं ना सर कितने का पैकेज लग जाएगा, तुम ही डिसाइड करोगे, ठीक है। ये अच्छा। तुम्हारी लैंग्वेज डिसाइड करेगी। मैं कोई इंग्लिश का बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी पसंद करता हूँ, इतनी कि मैं लिखता भी हिंदी में हूँ, लेकिन अब जो समय की ज़रूरत है उसके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा, अगर बड़ा पैकेज गेन करना है तो, ठीक है। ओके सर। अभी कई ढेर सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि फॉरेन के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, मुझे कहते हुए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट ये सच है, कुछ कम बच्चों को निकाल दिया गया। क्यों पता है, क्योंकि वो फॉरेन के क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझ नहीं पा रहे थे कम्युनिकेट करके। अब वो रिक्वायरमेंट नहीं समझ पा रहे थे, काम कैसे करेंगे, या। ठीक है। तो इस चक्कर में जॉब उनकी चली गई। तो ऐसा ना हो, इसलिए कम्युनिकेशन पे फोकस, आधे घंटे 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ लिखो, डेली जो रूटीन किया है, इसमें से विशाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने लोग यहाँ पर हैं, सबके लिए बोल रहा हूँ, आधे घंटे डेली का रूटीन लिखो, बहुत अच्छा तरीका रहेगा। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है। अब मेरी प्रैक्टिस कैसे हो जाती है, आप लोगों के मॉक इंटरव्यू से हो जाती है कभी कभी। अभी थोड़ा बहुत मुझे तो जानते हैं आप लोग, वीडियो वीडियो का भी शौक रहता है, तो कल मैं कुछ फॉरनर से बात कर रहा था, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहा था। इतनी बेहतरीन इंग्लिश वो लोग बोलते हैं, वो पहली बात तो समझने में बड़ा समय लगता है। अब मैं उसको पहले ट्रांसलेट कर रहा हूँ अपने माइंड में, ठीक है, उसको आभास नहीं होने दिया, क्योंकि ठीक है बॉडी लैंग्वेज वगैरह से मेंटेन कर लिया चीज़ों को, बट उसके बाद को पहले मैं कन्वर्ट कर रहा था अपनी भाषा में, गेस कर रहा था कौन सा वर्ड बीच में बोल के चला गया वो, ठीक है। अच्छा। उसके बाद मैं कन्वर्ट करके उससे क्वेश्चन कर रहा था, और कई बार कैसे कई ऐसे सेंटेंस थे जो कि मैं बोल रहा था उसको समझ नहीं आ रहा था, समझ गए। तो मुझे उसको कम्युनिकेट करते समय कई जगहों पे स्पेलिंग्स भी बताना पड़ा, आई एम ट्राइंग टू से लाइक दिस, ठीक है। तो समझ गए कम्युनिकेशन का प्रभाव, ठीक है। यस। और मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, तब मेरा ये हाल था, आप सोचो, ठीक है। तो इसलिए कम्युनिकेशन पे आधे घंटे जरूर दो, ओके। ओके सर। ओके जी, चलो नाउ मिस्टर रेड्डी इज रेडी, सो विल कम विथ मिस्टर रेड्डी, देन नामेश शर्मा। मिस्टर रेड्डी, on your mic and Am I video. audible? Yes, Shiva. Just try to adjust your camera. Yes, much better. Now, Mr. Reddy, how many lectures you watch in STAT? 23, sir. Why only 23? Time was not that much enough, sir. Hmm. So, how many hours you doing the job right now? 10 hours, sir. 10 hours a day. And you're preparing the food for yourself every day or someone else?
No, sir. I'm with my family. Okay, then try to manage already, because this is the time you need to focus. This is for 1 or 2 months only, right? After getting a reputed job, Oh, you do not do that much hard work. Okay, well, what are the things till now you learn instead, or till now what are the things you can do instead? we can do structural analysis and we can perform concrete design on the structure what we have done analysis, and in final we can do uh, design for foundation. Difference between analysis and design. Uh, in analysis, we will give material property and we will assign loads and we will see the output. And in design, we will be designing the structural members according to the IS codes. Structure members according to the IS code. What are the important IS codes required for the designing the RCC structures? IS 456 2000, IS 875 Part 1 to Part 5, and IS 1343. That are That's I remember names, sir. mm, 1343 for what? Seismic design. 1343. And what Yes, yes, sir. 1893? 1893. 1893. Yes. 1893 for don't know, sir. Okay. And IS 875 part 3 is used for what? Wind load, sir. Wind load. How to calculate wind pressure? Force acting on the unit area, sir. Force acting on the unit area. From that we can Yes, calculate. So any formula is there? yes, sir. It something we will be deriving from VB. What is VV? Design shear force. How to calculate base shear? We will be having coefficients of K1, K2, K3. We should derive it from the code book and we should uh, find the VB. तैयारी नहीं हुई रेडी, ठीक है ना? आपका इंटरव्यू क्रैश हो जा रहा है, इसका मतलब है अभी और मेहनत करना पड़ेगा. Okay, you need to do more hard work. This is not, right now just we're talking about the seismic and wind only. There are lots of another topics also, right? These are the what we done in up to 23 lectures. I'm not asking out of the box anything, but they are not going to ask the cover, they are not going to ask the mixed proportion, because that interview is for the structure engineers. Most responsible profile in the civil engineering is structure engineering. So they are going to ask the hard questions, and I think you need to be prepare yourself for that. You need to save your at least 5 hours a day for that. Separate 5 hours in that, not any notification like Facebook, Insta, or anything else. Hmm? Try to prepare. First, you need to watch the lectures so that you can get more clarities. Okay, ready? And you created your resume and portfolio. Yes, sir. I have created. Okay, then that's nice. You trying to attend the interview. That's nice. That's first thing that is good you are doing. But second thing is you need to be prepared so that you can perform in the like companies also. Okay. Sir, can you explain the steps for preparing for interview, sir? I'll just give you the list. Just prepare this list. I have a list. Okay, sir. Okay. So I'll just Okay, share you this after this mock. You just prepare the topics. That is enough to crack the interview. Okay. Okay. okay, then. Okay. Ji. Now next is Mr. Namesh Sharma. Hello, good evening, sir. Good evening. Ji. Good evening. Mr. Namesh,
Tell me something about yourself which should not mention in your resume. So generally all is mentioned in my resume, but the special things which I'm not mentioning is my hobbies is to watch movies, go outside and connect with connect with nature environment, and doing some interesting works like experiments and etc. in every field. Okay, so last time which movie you watched? So I watch what name is the so it's 12th fail. 12th Fail. जी sir. What you learn from that? Sir, I learned from that कि the human is not for a failure. Generally, failure is not a end of life. Failure is start to new chapter in his life. In this movie, the boy was fail in 12th, and after his hard work, he cleared the UPSC exam. Means failure is journey. Yes, sir. Failure. No, it's a beginning of new chapter in life, sir. Okay, means you need to start again, right? Yeah, sir. Start and again, sir. Okay. What I believe, this is journey, but it's okay. Yes, sir. It's for everyone different. When you start something, you will get success or failure. Yes, sir. Two things only you can get. So I think Yes. let's again start. So the same with that you said is also Yes. right. Okay. Now how many lectures you watch in instead? Sir, 36. 36. How to calculate base here? Sir, to calculate basis. Sorry, sir. I not remember. How to design shear wall instead? Can you just explain the steps? Yes, sir. Sir, first we design the parametric mesh in STAAD Pro, and then give it to a thickness of 0.20 or 0.30 as per design, and then we apply a load on it, and analyze the structure. Then we go to a shear wall design, and then group the shear wall, and then create and then design the shear wall, and it gives us a reinforcement in horizontal and vertical in equal distancing and reinforcement. You complete the Assis Hotel project No, sir, I will start or just start now, right? this. Okay. How many seismic zone in India and what is the factor of zone 5? So there are 4 seismic zone in India: zone 2, 3, 4, and 5, and the factor of zone 5 is 0.36. 0.36. Yes, sir. Okay. And how to calculate wind pressure? Sir, wind pressure. There are a formula in which many factors are included, like K1, K2, and K3, which depends on the area of the environment, and there are different factors value in as per the country in different area. Okay. Ji. What is the biggest challenge for the any structure engineers? Sir, I think the biggest challenge for the structure engineer is to design a economical building with their serviceability, safety, and economic to the client, and it is very sustainable in harsh environment of the earth. ओके जी, थैंक यू सो मच रमेश। 5 चीज़ें होती हैं जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को हमेशा देखना होता है। तो द स्ट्रेंथ, ठीक है, जो सबसे जी सर। इंपॉर्टेंट है। बिना स्ट्रेंथ के स्ट्रक्चर इंजीनियर का मतलब क्या? दूसरा सर्विसबिलिटी, ठीक है, क्या वो सर्विस दे पाएगा क्या, ठीक है। सेकंड, थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी, क्या वो ड्यूरेबल हो पाएगा क्या स्ट्रक्चर की लाइफ नहीं रहा तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का मतलब क्या है ना।
फोर्थ Yes, इज sir. इकोनॉमी। ठीक है, बजट में नहीं है तो कोई भी स्ट्रांग बनाना है, लोग बोलते हैं कि भाई ये खाओ मजबूत हो जाओगे, सही बात है, बट बजट में Yes, sir. खाओ ना। ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, लास्ट वन इज एस्थेटिक। ठीक है, Aesthetic. कोई भी Yes. चीज़ डिज़ाइन तो बहुत अच्छी कर दिया आपने, बहुत मजबूत कर दिया, बट वो मजबूती तभी अच्छी लगेगी जब वो खूबसूरत होगी, अच्छी होगी, Yes. राइट। तो यू नीड टू Yes. गिव इट द एस्थेटिक मीन्स 5 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। ओके। Okay, sir. ओके, थैंक यू सो मच रमेश, कीप Thank कंटिन्यू। you, sir. थोड़ा सा फास्ट अगर लेक्चर वॉच करेंगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बट ठीक कवर कर रहे हैं आप, ठीक है। Thank you, sir. ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर एस, ओके, नो इट्स नॉट मिस्टर, इट्स मिस विधि। विधि रेडी? Yes, sir. वेरी गुड। Good evening, sir. Good evening, Vidhi. Vidhi, how many lectures you was in STAT? Sir, 37. 37. Not bad. Okay, and you started your ASCII student project? So, yes, sir. It's halfway. I've completed it in Halfway. process. That's nice. Okay. And you started your resume and portfolio also? Sir, resume half is done. Portfolio, so I want to put like my work. So, I need some time to do the work and. Let's start something, and because process is important, na? Without process, that means zero. Okay. Now, can you just explain us what is shear force? So, shear force is basically algebraic sum of all the forces towards the right or left of the section which we calculate. What are the supports we can provide in STAT? So mostly for the building we use fixed support is used. Okay. What are the other types of supports are available in the STAT? So other supports are um, fixed support. That too is another is mentioned, right? Yeah, so more there I can't recall it currently. Okay. What are the different types of shear wall? So shear wall. So steel plate structures are there. Then reinforcement concrete. Also rigid structures are there. That is for till 20 to 25 floors to resist the lateral force. What is shear wall? So shear wall is a member to resist the lateral forces on the building. And It's what? mostly like provided when you're the lift and all it's there. Okay. In lift area, which type of footing we provide? Um, Not footing. Sorry. Which type of shear wall we provide? so it is reinforcement. There are different names. So which one we provide for the footing area, for the shear wall areas, lift area? Sorry, lift area. So reinforcement concrete shear walls. Okay, you're talking about the rectangular reinforcement, right? Yes, sir. But it is core type shear wall. Core type shear wall. Okay. What are the different types of foundations with you? Sir, it is mainly divided into deep and shallow, and then we can use mat foundation. Isolated footings are there. Combined footings is there. Okay. Give me 3 examples of shallow footings and 2 example of any deep footings. So shallow footings are done for basically small story buildings, and deep foundation is done for high-rise building. We can consider a high buildings like maybe a mall or a. Example of that footing or foundation. Example. So sorry. Examples. Sorry, sir, I can't. Okay. Recall. Okay. And where we use raft foundation? So rough foundation is mostly used when the soil can't bear more large load, Okay. In that areas or we use. or moisture is more in the soil. If moisture is there, then we use raft foundation.
And where we use pile foundation? So it is mostly used in deep like breaches and all when we do for to go into deep ground. Deep down for that we use. Okay. And Vidhi, what should we hire you? So currently I'm a fresher and I am also working on my skills. So I am very much interested in structural. So I feel I am hardworking as well. So with skills and my dedication and hard work, I can give a justice and give my best towards the task I am given. Also, I'm good at my communication skills and a very good team member. So these are the few points, sir. तो अपने आप को फ्रेशर क्यों बोल रहे हो? फ्रेशर बोलोगे ना तो तुम्हें फ्रेशर्स को डायरेक्ट ही कंसिडर कर रहे हैं ना. अब उनको फ्रेशर्स की नीड होगी तो हायर करेंगे, अदरवाइज नहीं ना. You can say कि I recently pass out but I have this skills. Also I done my 6 month internship with Unix Civil. In that internship I learned that अब वो तुम्हें अपने internship का पावर वहाँ यूज करना है. खुद से अगर तुम बोलोगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है या फिर मैं फ्रेशर हूँ, अब उनके पास फ्रेशर की ओपनिंग होगी तो करेंगे. अब कोई भी फ्रेशर को क्यों ट्रेंड करेगा? उनका नुकसान होता है. 6 महीने साल भर करोगे उसके बाद छोड़ के चले जाओगे, है ना. तो क्या से कि I just pass out my engineering in 2024 or 5 जो भी तुम्हारा है. But after that I just completed my this skills and I done my 6 month internship with Unix Civil. In that internship I done many practice projects related to G+5, G+6 like this. And I have experience of these things of from last 6 months I'm doing these things. अब क्या हो गया? फ्रेशर का टैग खत्म. अब उनके लिए वैल्यूएबल हो गया तुम. तो खुद की वैल्यू खुद से बनानी है, ठीक है. बाकी अच्छा है तुम्हारा, तुमने लेक्चर्स भी काफ़ी अटेंड किए. बस इसको अभी फिनिश कर लो, फिर हम लोग अभी थोड़ी सी डिटेलिंग करके ई टाइम में चले जाएंगे. ओके Okay, sir. ओके जी, चलो. नाउ नेक्स्ट इज guys, who's ready? And now Gitanjali is there. So Gitanjali ready? And Momin is also there. So only two is pending, Gitanjali and Momin. Yes, sir. Okay, so Good evening. good evening ji. Gitanjali. Okay. Good evening, sir. Good evening ji. Gitanjali, from last few weeks you're not update with your assignments, right? Because I'm not well. Because of work load. No, because I'm not well You're not well. before 2 days. Your health is not good, right? Yes. Okay. But I will share today all 2 projects and my resume and book Great. also. Okay. So now you join your office or you just take on the leave for that? No, I will join today Okay. from yesterday. Okay. Got it. And now, Gitanjali, how many lectures you were then instead? So 36. Not bad. Approx. You need to complete that. Okay. And can you just explain us how to calculate waste shear in the seismic design? No idea. Okay. What cover we provide in column and why we provide column? Why we provide cover in the column? Cover provide for the cover provide for 5 minutes, sir. 40 mm cover provided for column. Cover is provided for the steels protect from the corrosion, and fire resistance. Corrosion and fire resistance. For that safety we provide the cover, right? Cover. Okay. And what is the meaning of mixed proportion? Means why we provide the mixed proportions? Mixed proportions means design mixing of concrete, cement and aggregate. It is depend upon the structure. We will used M20, M25 or M30 grade of mixed proportion. Okay. What is the difference between journal drawings
in summation drawings for the corporations? General drawings means it includes only plan and elevation. Elevation in the line plan, and summation drawing is it include layout plan, parking floor plan, all floor plans, and detail section and detail elevation, water tank calculation, and location. Okay. What is about PTCR? PDCR is a software used for the online sanction drawing. It is different. It includes different layers on it, like rooms, balcony, voids, duct, etc. So this is software or plugin? It is a software. Software. It is a different. It is a software. It is a different software. We just attach our DWG file in there, right? Right. Yes. Okay. What is the use of layers in AutoCAD? Layers used in AutoCAD define various part like wall, windows, door. It uh, uh, it can helps to it can helps to create drawing neat and clear. Yes. And what is the use of purge command? Purge command. It is used for purge command used for um, uh, purge command used for delete um, delete 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 the layers you don't want. Okay. And what is the use of overkill command? Overkill command. It is also it's a overkill command used for double line. To Overkill command is used for deleting a double line in a drawing. Okay. Uh, and why want to become a structural engineer, Gitanjali? Because I want to career in structural engineering. This structure is a more tasking and enjoyable for. ओके, थैंक यू सो मच गीतांजलि। काफ़ी कुछ आपका सही भी है, थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन अभी भी वीक पड़ती है तुम्हारी, कहीं कहीं पर तुम फंस जाते हो कि आगे क्या बोले, है ना। उसके दो रीजंस होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि कुछ लोग टॉकेटिव नहीं होते हैं, ज़्यादा हम बात किसी से नहीं करते ना, तो जब पहली बार किसी से बात करें या फिर इंटरव्यू वगैरह में बात करें तो इंसान फंसता है ना। ऐसी चीज़ें होती है। तो पहली चीज़ तो ये, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, घर में कम्युनिकेट करो, किसी से भी कम्युनिकेट करो। सेकेंड थिंग, थोड़ा सा टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग रखोगे तो प्लस पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है कि नाउ आवर ब्रेन इज देयर, जो इंडस्ट्री में जाएगा उसी ब्रेन का टाइम होगा, और उसी ब्रेन का तुम घर पे आओगे 9 घंटे के, उसी 9 घंटे के हो सकता है तुम 90,000 लेके आओ, 45,000 लेके आओ, 9,000 लेके आओ, या फिर जॉबलेस रह जाओ। राइट, क्यों ना हम उस जो हमारा 9 घंटा है उसको 9 लाख तक लेके जाएं। ठीक है, उसको ले आने के लिए थोड़ा सा जो बाकी के 10-12 घंटे अपने पास हैं उसको सर्वाइव सही तरीके से करो। ठीक है, बाकी आप अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सर। ओके जी। तो देखो गाइस, बस यही होता है कि हम लोग सभी लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, कोई मेहनत के बिना नहीं है, बट ये होता है कि ये प्रॉब्लम बस इतनी सी होती है कि उस मेहनत में कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। और आप देखना कि मैंने कहीं बड़ा अच्छा पढ़ा था कि किसी को उसके औकात से ज़्यादा ऊपर वाला नहीं देता है। ठीक है, वर्ड सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, बट ये सच है। औकात इन द सेंस को इजी वर्ड कर दो तो किसी के हार्डवर्क, जो उतना वो मेहनत करता है उसके हिसाब से, जितनी उसकी काबिलियत होती है उसके हिसाब से ही उसको मिलता है। ये काफ़ी हद तक प्रूवन है।
किसी का छोड़ दे कि भाई उसका तो ऐसे ही हो गया, अच्छी बात हो सकती है, उसके कुछ फल अच्छे हो सकते हैं, बट एट द लास्ट मेहनत ही सब कुछ है। नाउ मिस्टर मोमिन रेडी? मोमिन यू जॉइन लेट, क्या हो गया आज बहुत लेट है? योर माइक इज ऑफ नाउ, तुम अभी बाहर ही हो लग रहा हाँ, मैं अभी ऑफिस से बाहर निकला हूँ। है। ओके, सो यू कंफर्टेबल फॉर द मॉक और नॉट? हाँ हाँ, इफ कंफर्टेबल। इफ यू वांट यू कैन ऑफ योर कैमरा, क्योंकि बाहर हो तो चलने में दिक्कत हो सकती है। नहीं, कोई बात नहीं। ओके जी। Okay. Now, how many lectures you doing any second job also, or like only one job you doing at a time? I just now only currently one job, Okay, site engineer. site engineer. And what is the time for that? 10 o'clock to 7. 10 o'clock to 10 to 7. 7. How long from Hmm. your distance? They provide the accommodation also? Yes. Okay. And what salary they are offering? 12,000 is the immense salary currently. Only 12,000. Yes. And what's your expectations? As a structural engineer, sir, you are asking? Yes, definitely. As a structural engineer, I am expecting at least the 22 to 25K. 22 to 25K. And as a site Yes. engineer, what are you expecting? Actually, when I've given the interview, so they have got a slab here. So yeah, they will first in the in the initial stages, they will check like how much capable you are as a site engineer. So I've been assisted in the interview that we will give you a raise, but initially we want to check like what type of job you can do as per my like last consultant, because there I was getting 20,000. Apart from that, it includes accommodations as well. But when I came here, as I was trying to get a job in my hometown itself, on a temporary basis. So that's why I've given it a try. So they have claimed that they will give me a raise after 2 months, Okay, so you just joined that depending company. upon my, yes, And university this company is? in my hometown, Bhiwandi city only. Bhiwandi is in which state? State Maharashtra, district Thane. Thane. Okay. Hmm. So you looking for the job in the Mumbai location only, or you're open for the different locations also? Yes, I am comfortable. Like within Maharashtra, I can comfortable in any location. Okay. Why you left your previous job and joined your city, native place Uh, job only? Actually, in my previous job, there is a shortage of projects. So in that case, I've been laid off. I didn't left that organization. Laid off by you just laid off by yourself, or they just laid off? No, no, they have laid off me Okay. by my consultant itself. Yes. Okay. So now company is closed now? No, no, it's running currently, but it's working with minimum projects. Okay. Then why they Yes. left you only? Why not others? Actually, there is a issue with which regards to like budget of the organization. So it seems that the boss which I used to have, so he had his son in my place. So he want to educate him instead regards to paying me. So it's kind of a, we can say, a deduction of budget and cost cutting. So in that case, I've been replaced Okay. because I've been told that I have I've tried to convince them that I want to stay, but they have told me that we don't have that kind of budget to provide us, like give you with the desired salary that you want to have. Okay. I do I do understand that I'm currently working on a lower salary just because I'm currently with I'm doing a course with Unique Civil. So that's why I've joined this organization because it is completely time bound. So after 10 to 7, I can join your lectures as well, sir. Okay. I understand that they are offering me less salary. Okay.
No, because you That's why I'm trying to okay. increase my skills as well. Okay, right now you're talking with the company, okay, and you're just explaining your Hmm. explanations. Okay, not bad because Yes. this is the genuine reason you can say, and try to say Hmm. कि this is led off the many members. Okay, Hmm. not Hmm. only you. Uh, and Hmm. you can say कि that is maybe near to close. Okay, because in Hmm. that case if you say कि only they just left you, उसमें क्वेश्चन मार्क किया जाता है कि Hmm. यार ये बंदा गड़बड़ था क्या कुछ. Hmm. Okay, so we're not going to be pick that point. So we can just say कि हम ठीक कर रहे थे but they did not get any projects, so they just left their employees. ठीक है, employees में Hmm. number of employees. Okay, not only you. Second thing, now you're preparing for the structure engineering job. So what do you think, what are the things required to become a structure engineer? For being a structural engineer, you have to get thorough with the software basics first. Apart from that, you have to know AutoCAD. You have to know the basics of importing the center line plan. You have to work practically as well on the site. So when you give plan in accordance with the site, so that will if like there is any troublesome issue happen, so that you have to cater as well. Because initially where I am working, I am facing a issue when we have done foundation. So we came across there is a drainage line going through. So there is a seepage of drainage line which is coming to our site while doing the foundation. So that may hamper the quality of the project. So in terms of that, I can say that would be also that thing also matter the most if you have a practical knowledge. Apart from that, you should know ETAP software, Stack Pro RCDC. And apart from that, you should know how to optimize the structure. Being a structural engineer, you should know how to optimize because it is like you have to provide a cost cutting as far as concerned. Because if you will provide a better solution in terms of being an economical engineer, so you will get a higher chance to uh, get the project in your hands. How many interviews related to structures you faced till now? As of now, I have faced two interviews. I have faced one. I can say it was an internship. Another one I have given the interview in an organization where I have hand over my resume. So they came across with the profile being in my past. So I was working as a site engineer. So they like educate me that you should join somewhere regards to learning a software because as we see in your resume, you don't have a portfolio. So how can we trust you? We will not carry forward with your interview. So as a feedback, I took that and as currently I'm doing the internship with Unix Civil. So I do understand whatever feedback that I have got. It was very helpful to me. After joining Unix Civil, I have got a good learning here. So now I can say that I am very much educated Confident. in terms of educated and confident in terms of knowing the software. Great. थैंक यू सो मच मोमिन. मोमिन थोड़ा सा फास्ट करो, सैलरी कम मिल रही है. देखो अपने 9 आवर्स और ये जो यंगर एज होती है, ठीक है, ये बहुत वैल्यूबल है. Mhm. ठीक है, इसको ऐसे ही मेहनत करो कि जहाँ तक हम फेंक सकते हैं वहाँ तक जाएंगे. ठीक है, फेंक इन द Mhm. सेंस कि हम जितना ग्रोथ कर सकते हैं, अपने पैर को बढ़ा Mhm. सकते हैं, वहाँ तक हम जाएंगे. तो कोशिश करो Mhm. कि इसकी स्पीड को थोड़ा मेंटेन करो. ठीक है. Mhm. ठीक है, 12,000 इज़ नॉट लाइक कि कोई स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो करना पड़ता है ना इंसान को. हमने भी किया है, Mhm. तुम भी कर रहे हो, सभी करते हैं, है ना. बट स्टार्टिंग Mhm. स्टे नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक हाँ होता है ना हाँ. कि सेटिस्फैक्शन हो गया. ये सेटिस्फैक्शन वर्ड Mhm. दुनिया का सबसे गंदा वर्ड है. इस इंडस्ट्री में, ग्रोथ इंडस्ट्री में सेटिस्फैक्शन होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, Mhm. तो फास्ट करो और इंटरव्यूज फेस करो, और इंटरव्यू फेस करके कोशिश करो कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पैकेज गेन कर सके. और अभी तुम्हें ज़रूरत है इस पैकेज की. और आई थिंक जो मेरा अभी तक का मानना है, यू आर कैपेबल इनफ टू क्रैक गुड पैकेज ऑल्सो. अप्रॉक्स सर 4 मुझे फोर जानना था लैक्स कि मतलब जैसे JW कंसल्टेंट में यस. अगर आपका कोई रेफरेंस हो
मतलब अभी हमारा तो एक अभी रमजान आने वाला है, हाँ बट आप आफ्टर रमजान मैं आपको कांटेक्ट करूंगा ताकि पुणे में भी अगर कोई लोकेशन रहेगा आपके कोई मतलब हाँ, पहचान में JW में हम बता तो। देंगे, JW में शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे तुम हाँ, प्रिपरेशन कर सकते हो, और बिकॉज इंटरव्यू क्रैक मैं तुम्हें करना मैं है। खुद भी जानता हूँ हम्म। कि ये सैलरी की मतलब मेरे को बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये सैलरी मेरा जो मेरी कैपेबिलिटी है वो हिसाब से सैलरी नहीं है। यस, तो देखो, हमेशा हम्म, हमें बिगर वन देखना है, ठीक है, लोअर वन में नहीं देखना है। लोअर वन इज फॉर दैट स्टेटस कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो चलो हमने कर लिया, ठीक है, वो एक स्टेज आता है लाइफ में कि क्या बोलते, कुछ तो नहीं मिल रहा था तो चलो जो तो मिल रहा था वो कर रहे हैं, ठीक है। बट अब ऐसा मत करो, कोशिश करो, क्योंकि देखो पता है कि कंपनी क्या पूछेगी, पता है रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्यों नहीं, यूट्यूब सोर्स है, मैं सोर्स हूँ, ऑल इन वन सोर्स है, नाउ यू हैव अ इनफ थिंग्स टू क्रैक द इंटरव्यूज, तो क्यों नहीं अभी करें, ठीक है। तो वेट मत करो, मेरी मानो तो टाइम से इंटरव्यू क्रैक करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड ये फॉर, जो बोलो। लाइक ये लास्ट इसका जो कंसर्न है, मतलब ये अगर लास्ट जॉन अगर हम सैलरी की अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो मेरा तो क्या है, मैं मतलब उनके लेके कुछ लमसम अमाउंट डाल दो तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, मतलब वो तो समझ लेते हैं सामने के ऑर्गेनाइजेशन। भले यहाँ पे कम है लेकिन सैलरी स्लिप में मैं प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं इतना नहीं, इतना अनऑफिशियल पेमेंट है ऐसा अगर कर। आप प्रूफ कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको दिखाना हम्म, चाहिए। क्या होता है, हम्म। कोई भी 12 से तुम्हें डायरेक्ट 22 नहीं देगा, एक ऑफिशियल मैनर होता है हाँ ये बात तो सही है। सैलरी हाँ का, ठीक हाँ है, हाँ। ठीक है। तो मेरी सैलरी 18,000 थी, और मुझे ऑफर हुई थी 30,000। मैंने उनको नहीं बोला था कि मेरी 18 है, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी 18 है तो उन्होंने बोला 30% के ऊपर हम देते ही नहीं, तो मुझे वापस से 25 पे काम करना पड़ा। ऑफर हो चुका था, मतलब बाई कॉल सब कुछ डिस्कस हो चुका था नौ, क्योंकि उनकी सैलरी स्टार्ट होनी थी 30 से, जिस काम के लिए मैंने इंटरव्यू क्रैक किया था। बट क्या बोलते हैं, जैसा उन्होंने बोला कि 30% से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं एज पर देयर नॉर्म्स, तो मुझे मजबूरी में 24,000 कुछ आता है, तो उन्होंने बोला हम राउंड ऑफ आपको 25 देंगे, जिसमें से 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स, तब पीएफ का इतना क्रेज नहीं था तो पीएफ नहीं, तो मतलब 24,800 पे मुझे क्लोजिंग दे दिया उन्होंने। रीज़न 30% हाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अच्छा, वो कोशिश करो, कंपनी के नॉर्म्स में था कि 30% ही रहेगा लास्ट जॉन पे। यस, जब तक कि कंपनी नॉर्म्स को चेंज ना करे, कभी कभी चेंज भी कर हम्म। देती है, जैसे उनका पर्सनल बेनिफिट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो सर, बोलेंगे इंडस्ट्री के भाड़ में हमको अपना प्रॉफिट देखना है तो मैनेज कर लेते हैं। बट ऐसी सिचुएशन जब हेलो। रेयरेस्ट केस में आप रहोगे तब होगा, ठीक है। चलेगा, रेड्डी कुछ पूछना अभी चाह रहे कैसा हैं? है कि जैसा आप बोल रहे थे कि ये मेरे को कुछ नहीं मिला है तो मैंने कर रहा हूँ अभी टाइम, मतलब मेरा अभी कुछ नहीं से बेहतर है कुछ सही, हाँ, ऐसा है ठीक तो है, वो हिसाब से। ये की चीज़ करो। दूसरी चीज़ आप सभी को हाँ एक छोटा सा मैं और एडवाइस दूंगा, बस रेडी, इसके बाद आपका क्वेश्चन ले रहे हैं, तो एक छोटी सी एडवाइस दूंगा एट योर सिचुएशंस एंड सबके लिए मैं बताता हूँ। प्राइवेट इंडस्ट्री का एक की है कि ये है कि जैसे ही आप ज्वाइन करो अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, 6 मंथ का बैकअप बना के रख लो, ठीक है। ये गाइस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो नहीं करता है वो लॉन्ग टर्म में परेशान होता है, ठीक है। आप कभी भी, जैसे अभी बोला है ना इन्होंने, मोमिन ने, कि ले ऑफ हो गया, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बहुत बार होती है इंडस्ट्री में, ले ऑफ हो जाता है। कभी कभी हम लोगों से खुद से गलती हो जाती है और लोग कर देते हैं, कभी कोई पॉलिटिक्स की वजह से जॉब चली जाती है, आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, कोई और करके आपको निकलवा देता है। ऐसी कई सिचुएशंस में कई बार ऐसा होता है, ज़बरदस्ती आपको काम दे रहे हैं, अब आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, पीजी का, हॉस्टल का रेंट देना है, घर पे पैसे देने हैं, खाने का देना है। एज अ मिडिल क्लास मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, ठीक है, किसी को शौक नहीं है इतने कम सैलरी पर काम करने की, बट हमारी सबकी अपनी एक अलग अलग मजबूरी होती है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही कोई जॉब लगती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इतने कम सैलरी में, फॉर एवरी वन, अगर 20 के ऊपर आपका सैलरी है, 2,000 3,000 5,000 रुपये के आसपास जो बनता है आपसे, उतना आप सेव करके किसी म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल दो, ठीक है। मैं राइट पर्सन नहीं हूँ म्यूचुअल फंड बताने के लिए कौन सा करना है, कोई भी कर दो, SBI स्मॉल केस वगैरह अच्छा बढ़िया परफॉर्म करते हैं। बेसिकली बस इतनी सी बात है कि जब आपको कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पर बात आ गई आपके जॉब पे, छोड़ दो, अब ये पावर कौन देगा, ये 6 मंथ का बैकअप देगा। 6 मंथ का बैकअप कैसे पावर देगा, कहीं और जाएंगे और प्रिपेयर करेंगे, 6 महीने में कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगा, 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, 3 महीने में नहीं होगा, क्या इतनी खराब है कि 4-5 महीने में भी ना हो, ऐसा नहीं होगा,
तो बेसिकली 6 महीने का बैकअप प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, जिनके पास घर से इतना नहीं है कि घर वाले बोल दे कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मैं भी उसी सिचुएशन से हूँ, मेरे घर वाले कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे ही लीड करना है, ये मुझे पता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। 6 मंथ बैकअप मुझे किसी ने बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ, करोगे इंजॉय करोगे अपने लाइफ पे, फिक्स मान लो, ठीक है। चलिए, एंड नेक्स्ट राम प्रसाद जी, रेडी? रेडी कुछ पूछ रहे थे? यस रेडी, प्लीज कंटिन्यू। आरसीडीसी इंस्टॉल नहीं हो रहा सर। अच्छा जी, आरसीडीसी मतलब क्या प्रॉब्लम क्या दे रहा है? नहीं सर, वो विंडोज फाइल ओपन करते भी नहीं आ रहे सर वो। आपने किसी से कांटेक्ट कुछ किया, पूछ रहे अल्पेश सर से या मनीष सर से कांटेक्ट किया किसी से? नहीं सर, नहीं कॉन्टेक्ट। तो तुरंत कांटेक्ट कर लो, तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जिससे क्लास खत्म होती है अभी इस समय पर, टाइमिंग हो गया है, अल्पेश सर का भी टाइमिंग हो चुका है, मनीष सर का भी। किसी को भी तुम कॉल करोगे, दोनों लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो इसी काम के लिए आपके लिए असाइन ही है। अगर उनसे नहीं होता है तो मुझसे पूछ लो, बट वो कर लेंगे। क्लियर है? रेडी? अभी तुरंत ही, क्योंकि मैं डेफिनेटली उनको एक सैलरी पे कर रहा हूँ, तो इसी काम के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो निश्चिंत होके तुरंत के तुरंत अल्पेश या मनीष किसी का भी नंबर आप ले लीजिए अंकित सर से, या नहीं हो तो वो से होगा, ज़्यादा ग्रुप में होंगे वो लोग, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट करके तुरंत हेल्प लो, ठीक है। कोई हेल्प नहीं करता है मुझे बताओ, ठीक है। नाउ वैष्णवी वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, आई एम रवि। अच्छा रवि, ओके ओके रवि बोलो। सर मैं भी आशीष पोर्टर को इंपोर्ट कर रहा हूँ, पर उसमें पूरे कॉलम वगैरह सारे आ रहे हैं, मैंने जबकि हटा चुका हूँ उससे, कॉलम ग्रिड सारा हटा दिया है। हाँ, जब उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ तो सारा उसको और ये उसका यूनिट देखा क्या? यूनिट गड़बड़ है क्या? यूनिट भी गड़बड़ नहीं हो सकता है। सर, यूनिट चेंज कर दिया था। अच्छा, उसको सेलेक्ट करके नए ड्राइव में सेव करो, ठीक है। और नया में किया है सर, ठीक है, नहीं नए में मतलब नहीं, स्क्रीन अगर शेयर चाहो करना तो स्क्रीन चाहिए। शेयर कर लो, ठीक है, मैं हाँ सर, मैं बताता हूँ। स्क्रीन